Students, hi everybody. A very good afternoon to everyone right in there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session, wherein we are going to deal with the very chapter Glimpses of India. It's gonna be an important one. I'll be sharing with all of you the important questions. Okay, so I would like to urge you all to please give me a confirmation in the comment section that you all can see me well and you all can hear me well, and then we are definitely going to move ahead. Alrighty, people, so quickly give me a confirmation in the comment section that I am visible and audible to everybody right in there. Okay, because the session is going to be an important one, and herein we are going to deal with the chapter Glimpses of India, and it's like a very important chapter. I've been telling this to all of you. Whenever we are dealing with the whenever you are dealing with the chapters wherein there are facts, okay, like wherein like it's all reality, where there is no fiction kind of a thing, so we have to always take those chapters a bit more seriously. It's like very, very important. Okay, so please make sure everybody that you all are taking care of the fact that you are reading every bit of the chapter, because अगर आपने chapter पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए खुद के लिए easy होगा, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ध्यान से आप इन पे अटेंशन पे करो। हे गौरांश, हाय डियर, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। अब हम आगे चलते हैं। मेरा नाम है प्रेक्षा शर्मा, आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूँ मैं। आपको पता है मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को ये बात मैं बता रही हूँ दैट वी नीड टू बी लाइक रियली गुड इन कॉम स्किल्स, ठीक है। हमको अपनी कॉम स्किल्स को रियल में बेटर करना पड़ता है, हमें अपनी कॉम स्किल्स को लाइक एडवांस करना पड़ता है। उसके लिए वी विल हैव टू वर्क एट इट, ओके। यू कैन नॉट रियली डू वेल इफ यू आर नॉट like working well, all right, in all these contexts. Okay, so please make sure everybody that you all are just following me dedicatedly. You are taking care of all the classes that I am coming up with, and you are taking care of the fact that you are understanding every bit of the subjects that I am mentioning, okay? Because once you just understand what is supposed to be done in the right way, it'll be becoming easy for you for your own self. So let's work at it, okay, in a good manner. You get a good understanding of it, and you get to understand all the answers in the correct manner as well. Hey Akriti, a very good afternoon. Alrighty, people, so we are gonna deal with the important questions from Glimpses of India. First, I would like to ask you a question, okay? Like, what are the chapters that come under the category of Glimpses of India? कितने chapters इसमें हैं? जल्दी से मुझे ये क्या कहते हैं comment section में बताओ, क्योंकि ये तीनों chapters बहुत important है। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, प्लीज़ अपने एग्जाम में इन chapter से related, I mean जो भी chapters इसके title के अंडर है, selective study मत करना, बहुत ही ज़्यादा stupid काम हो जाएगा वो। If you're gonna go ahead with selective study, that's not gonna be helpful for you, so don't do that. Okay, it's not gonna be good. Keep it in your mind. Alrighty, is that clear to everybody? Yes, is that clear to everyone? Yes, everyone, is that clear to everybody? Quickly tell me, everybody. Is that making sense? Yeah. जल्दी बताओ बेटा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं? ओके, आप लोगों को ये बात तो आप टिप्स पे होनी चाहिए। इसमें थोड़ी ना हमें इतना टाइम लगाना है, ये तो इतनी सारी इजी चीजें हो चुकी हैं अब। यू हैव टू बी अ बिट मोर सीरियस अबाउट इट, राइट? अच्छा, ठीक है। सो हमारा पहला चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। मैं बता देती हूँ, आप लोग तो इतने इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हो बताने में, या आई थिंक कि आप लोगों को पता नहीं है। तो पहला चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो हमारा इसी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आ रहा है, दैट इज योर पहला ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हो गया, सॉरी अ बेकर फ्रॉम गोवा हो गया, दूसरा आपका कूर्ग है, थर्ड आपका टी फ्रॉम असम है, ठीक है। तीनों चैप्टर्स के नाम टाइटल्स अच्छे से लर्न कर लो। ऑलराइट, यू हैव जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, या yeah, so you have certain chapters, okay? एक तो आपका हो गया just a minute, something is happening with the pen. Let me just clear this. Yeah, a baker, all right, from Goa, ठीक है। ये एक chapter है, ठीक है। Go ahead with this. Then the second chapter is we have Coorg, all right, and the third chapter is tea from Assam. all right, तीनों ही chapters आपके factual chapters हैं, ठीक है। I mean इसमें सब में facts दे रखा है, so you are supposed to read all of them. इन सबको पढ़ो, all right? Is that clear to everybody? Is that making sense everyone? इन तीनों चैप्टर्स को क्या कहते हैं, आप अच्छे से पढ़ो। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक नहीं क्लियर है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग दिस टू एवरीबडी वंस अगेन, प्लीज टेक इट अ बिट मोर सीरियसली। इसमें करना क्या है, हर एक चैप्टर में जो भी आपके की पॉइंट्स है ना, उनको आप अंडरलाइन करो,
ठीक है, अंडरलाइन करके मेक श्योर कि आप उसके थोड़े पर्सनल नोट्स, वैसे तो अब इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, आप लोगों को ये सारे काम पहले करने थे, मैंने इस चीज़ का रिकमेंडेशन आपको ये दिया था ही, नीलेश, वेरी गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, कि मैंने आप लोगों को इस चीज़ का रिकमेंडेशन पहले दिया था कि जस्ट ट्राई टू मेक नोट्स, ओके, मतलब अपने जो नोट्स हैं वो बनाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने पर्सनल नोट्स बनाओगे, उनको रेफर करोगे, सो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, कीप इट इन योर माइंड। ऑल राइट, सो अ बेकर फ्रॉम गोवा है, कूर्ग है और टी फ्रॉम असम है, तीनों को अच्छे से ध्यान में रखो, अच्छे से पढ़ो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ओके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान से इन क्वेश्चंस को एड्रेस करो अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग देम ऑन एन एक्सटेंसिव लेवल, लाइक कीपिंग योर वर्ड्स टू बी कॉन्टेक्चुअल, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। मैं आप लोगों को अभी वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑल राइट, आई मीन दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड, सो काइंडली रिमेंबर इट फॉर योर ओन गुड। ए शुभ आइडिया, ठीक है, सो इन सब चीजों में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको टेंस की कंसिस्टेंसी देखनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, टेंस की कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखो। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको उसमें अपने क्वेश्चन का टेंस देखना है। ऑल राइट, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए, साथ के साथ आपको आंसर का भी टेंस देखना होता है। तो जो आपके क्वेश्चन का टेंस है ना, आपके आंसर का टेंस यूजुअली उसी टेंस में पूछा जाता है। हाय ज़ारा, हेलो डियर, वेलकम टू द वेरी सेशन। समझ में आ रही है आपको बात? जो आपका क्वेश्चन का टेंस है, आपका जो आंसर है उसी टेंस में बोला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वाई डिड, जस्ट अ मिनट, यप, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो यहाँ पे डिड है प्लस लुक है, सो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, हम मुझे पता चल गया कि सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे लगाया जा रहा है। अब ये कट क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मेरा आंसर यूज होने वाला है उसमें भी सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा। ओके, is that clear? That's really great, Zara. I'm glad that you do that. Do you understand everything correctly? Do you find the classes helpful for yourself? Okay. So what I'm trying to tell you all here is that the baker used to collect his bills at the end of the month, and baking was indeed a profitable business in the old days. Okay, the baker and his family, they never starved. Their plump physique was an open testimony that they were happy and prosperous. Plump हमें क्या होता है? Plump is basically like talking about the like plumpy look, like fatty. अब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो आपकी बुक में मैंने टेंस कंसिस्टेंसी का आपको बता दिया, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट all in order to tell you the second point. All right, that's so, I'm so glad, Zara. Thank you so much, sweetie. Thank you so much. तो सेकंड क्वेश्चन बेटा, सॉरी, सेकंड चीज जो अब आपको ध्यान में रखनी है, टेंस कंसिस्टेंसी हो गई। उसके बाद अब आपको ध्यान देना होता है, जस्ट अ मिनट, आपकी वोकैबुलरी का। ओके, लाइक दैट इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको अपनी वोकैबुलरी का ध्यान देना होता है। आपको जो वर्ड्स यूज करने होते हैं, दे हैव टू बी लाइक कंप्लीटली कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स यूज करो, इट रियली डज मैटर। All right, if you are using any fancy word, please do not use fancy words. That's not needed in your answers. Nobody needs the fancy or the exotic words. बच्चों को लगता है कि मैम पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मैम मुझे अच्छे मार्क्स दे देंगी। No बेटा, nothing like that happen. So don't let that happen. All right, is that clear to everybody? Don't let that happen. Instead just use the vocab, okay, which is the contextual one. अब इसमें जैसे अगर मैंने आपको बताया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओपन टेस्टिमनी हो गया, प्लम्प फिजिक हो गया, प्रॉस्पेरस हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, ये सारे मैं कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स यूज कर रही हूँ, यानी कि मैं वो क्वेश्चन आंसर वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो आपके टेक्स्ट में दे रखा है। तो उन चीजों को हमेशा कंसिडर करो, जो आपके टेक्स्ट में चीजें दे रखी हैं, गिव दोज आंसर्स, दैट ऑलवेज वर्क वेल। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स और वोकैबुलरी, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में देनी होती है वो होती है आपकी वर्ड लिमिट। आपको आपके एग्जाम में हमेशा वर्ड लिमिट को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, लाइक अगर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 40 to 45 वर्ड्स या 45 to 50 वर्ड्स दे रखा है, या फिर आपको दे रखा है 100 to 120 वर्ड्स या फिर 100 to 150 वर्ड्स, ये सब चीजें आपको अगर दे रखी होती हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज लाइक कंसिडरिंग दैट। Okay, if you are not considering the word limit, that is going to be like really problematic. Okay,
सो प्लीज मेक श्योर कि वर्ड लिमिट आप कंसिडर करो. देखो, यू कैन नॉट जस्ट गो लाइक यू, योर वर्ड limit should not be like under the value or the limit which is being given. Instead, it can be like 5% more but cannot be less. However, I will really suggest to all of you, please try to keep your word limit like totally intact. ऑल राइट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप एग्जैजरेट कर देते हो आंसर को, किसी को जरूरत नहीं होती है. अब जैसे फिर से इस एग्जांपल देती हूँ, व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. टेंस देख लिया. टेंस आपका पास्ट का कोई भी फॉर्म है, वो आपको इंडिकेशन दे देता है कि मुझे पास्ट में ही आंसर देना है. मैं पूछ रही हूँ आपसे, व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे, यू विल टेल मी दैट आई वाज एट माय फ्रेंड्स होम एंड वी वर हैविंग अ ग्रुप स्टडी. So you have given me the answer in the simple past, in the past continuous, like in a clubbed manner, which is okay and completely satisfactory. That is not problematic at all. Okay, but if you are being asked a question in the past tense and you're giving me answer in the present or in the future tense, that is not the right answer. Okay, Shivda, that has been like planned for tomorrow morning. Okay, 9 a.m. the class is going to be there on YouTube. That's being planned. Okay, I think the session has already been scheduled. You can check it on the channel. Okay. All right. Like there was a little switch in the plan. So that is why I came up with the important question today. But tomorrow in the morning, Sunday at 9 a.m. in the morning, we are going to deal with the tale of Costa the Dragon in detail, along with that fog and the trees. So be right there for that session. Okay. नाउ एवरीबडी, सो व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली. तो ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता दिए. अब इसमें मैंने फिर से अगर मैं आपको बोलूंगी वर्ड लिमिट, तो ये क्वेश्चन मेरा 3 मार्क्स का है. ठीक है, इसमें मुझे 40 to 45 वर्ड्स लिखने हैं, विच इज लाइक एन एप्ट थिंग. मैंने इसमें आंसर ऐप लिखा है. किसी क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन ही अंडर है, वो उतने में नहीं आ रही, तो हम हमेशा उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन जो है उससे मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो थोड़ी लिंक्ड हो. ठीक है, समझ में आनी चाहिए ये बात कि वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिंक्ड हो. तो व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. द बेकर यूज्ड टू कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. फिर मैंने आगे उससे कंटिन्यू कर लिया. तो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, टेंस कंसिस्टेंसी बता दी, वोकैबुलरी बता दी, आपको अब बता दिया मैंने वर्ड लिमिट. चौथा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पंक्चुएशन. पंक्चुएशन अगर आपकी क्या कहते हैं गलत है, आई मीन आपको जहाँ कॉमा लगाना था वहां फुल स्टॉप लग गया, जहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना था वह डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो वहां पे आपकी गलती होती है, उसके आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है, तो वो चीज हमको नहीं करनी है. उसके लिए आपको ये चीजें समझनी है. देखो, अगर आप कोई भी बुक रेफर करते हो, एजुकार्ट की बुक ले रहे हो, ओसवाल की बुक ले रहे हो, वहां पे अगर आप आंसर्स देखते हो और आप उनको रेफर करते हो, तो वहां पे भी आपको क्या करना होता है, वहां पे भी ये सारी चीजें नोट किया करो. कैसे आंसर लिखा गया है, कौन सा पॉइंट पहले आया है, कैसे फाउंडेशन रखा है क्वेश्चन का, बिकॉज दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्पफुल. सो यू बेटर वर्क एट इट. ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स यू फॉर इन अ लॉन्ग रन ऑल्सो. समझ में आ रही है आपको ये बात? This is like a very important thing. Hi Kalpkabra, hi dear. What kind of names you guys have? Okay, hi, welcome to the very session. ठीक है, ये 4th पॉइंट मैंने आपको पंक्चुएशन बताया. अब मैं आपको बताती हूँ हमारा लास्ट पॉइंट, विच इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके भी मार्क करते हैं, वो है आपकी स्पेलिंग्स. ठीक है, स्पेलिंग्स में गलतियां करते हो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, डेफिनेटली. ठीक है, नो टीचर विल एवर बी लाइक लीविंग यू इफ योर स्पेलिंग्स आर नॉट करेक्ट. So along with the vocabulary and the use of the contextual words, make sure that you're writing their spellings correctly, because writing the correct spelling really does matter. If you're not writing the spellings correctly, it's gonna be problematic. So don't let that problem happen. Okay? Am I making sense to all of you? Are you all getting what I mentioned here? Please make sure that here it is not happening like that. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? गॉट इट? चलिए, अब हम ये 5 पॉइंट्स को कंसीडर हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखो और उसके बाद आप अपने आंसर्स को कंसीडर करो. ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द बिजनेस ऑफ बेकिंग इन गोवा. ओके, so now here the thing is, the baker used to collect his bills at the end of the month. Baking was indeed a profitable business in the old days. The baker and his family, they never starved. Their plum physique was an open testimony. Testimony is like proof कि उनका जो plum physique था वो एक proof था that they were happy and prosperous, कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो prosperous थे. All right, is that clear to everyone?
समझ में आई ये बात? सो दिस इज व्हाट यू गोना राइट। आपने ये देखा कि यहाँ पे मैंने डिड का यूज किया, उसके साथ लुक आया, मैंने जो वर्ब्स यूज करी, यूज्ड है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे स्टार्व्ड है एंड वॉज है, ऑलराइट वर है. So you have to always use all these contextual things in order to come up with the right answer. So please be very careful about it, that the answers that are coming up, they are absolutely correct. Okay, because that really does matter. That whatever, for example, अगर ये आंसर अभी यूज करते करते अगर यहाँ पे आपने वर की जगह was कर दिया होता, या यहाँ पे सॉरी वर की जगह अगर यहाँ पे आपने are कर दिया होता, not was, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वर की जगह, जस्ट अ मिनट, अगर वर की जगह यहाँ पे आपने आर कर दिया होता, सो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग. आपने टेंस कंसिस्टेंसी तोड़ी तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको कंसिडर करना है, और वो पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ना ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे क्वेश्चन तो यहाँ पे पास्ट टेंस में पूछा गया है, लेकिन अगर उसका आंसर आपको क्या कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म में ही दे रखा है आपकी बुक में, और मतलब यू कैन नॉट लाइक यूज दैट इंफॉर्मेशन इन द पास्ट एट ऑल, तो जस्ट स्टिक टू दैट. ठीक है, मतलब अगर जैसे क्वेश्चन अगर पास्ट टेंस में है और आप प्रेजेंट फॉर्म में आंसर दे रहे हो, सो जस्ट स्टिक टू इट, आपको वो स्टिक करना है. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट, लाइक दैट शुड बी देयर इन योर माइंड. आप जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में पूछा गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड दे रखी है वो पास्ट में पूछी गई है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है? उस केस में you have to be very clear about this, that if the information itself is being given in the past tense and you can't do anything about it anyway, so you have to leave it the way it is. ठीक है, तो आपको बस उसे छोड़ना है. ठीक है, आई मीन छोड़ना इन द सेंस आंसर नहीं छोड़ना है आपको. वो पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर आप प्रेजेंट में दो, या प्रेजेंट का पूछा हुआ आंसर पास्ट में दो, अगर इन्फॉर्मेशन बुक में उसी तरीके से है तो. ठीक है, we cannot do about like we cannot do anything about it. Hey Ayush, all right, hi, namaskar, welcome to the class. I'm glad that you're in 12th standard. I hope that you really score good marks in your 12th boards. Okay, is that clear to everyone? समझ में आ गया? Any doubt herein? Do you want to ask anything? कुछ पूछना है इसमें? Anybody? May I make a move ahead? जल्दी से thumbs up दे दो comment section में. Jaldi say give me a thumbs up in the comment section if I can make a move ahead. Quickly guys, do that. Okay, चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं हमारा next, ठीक है? Now what indicates the presence of the pedo still in Goa? So अभी यहाँ पे क्या tense use किया गया है? We have a tense, okay, which is basically your simple present tense, right? If I'm not wrong. Okay. This is simple present tense which has been used here. Alright, so we are talking about the fact that what indicates that they are still present in Goa. Alright, so this has been something. Okay, alright Ayush. Okay, I just hope that you get that. All the very best. Okay. Alrighty people, here we go. Okay Arif, thank you so much. So क्या indicate करता है कि जो paiders हैं they are still existing in Goa? This is one of the questions like which can be clubbed with another part of your question in your like board sorry in your boards, I mean as a part of a 6 marker. ठीक है, so simple present है ये, keep that in your mind that you have to be very careful about it. Alrighty, here we go. So the presence of the paiders, जो presence है paiders की गोवा में even today आज भी is indicated by the fact that still there are mixers, there are molders and those who bake the loaves. Moreover, those age-old time-tested furnaces still exist. This is a very cut, clear, simple answer, or two-liner statement. Here it appears to be a little more than that. However, it is just a two-liner thing. This is something that can be a part of your clubbed question. ठीक है, मतलब question जिसमें एक से ज़्यादा part आया है. All right, that is what we are going to talk about. Yes, sure. Okay, got that. Now the next question. When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? So इसमें क्या है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं past tense में ही would पूछा गया है. Alright, कि वो baker कब आता था रोज. Why did the children run to meet him? जो बच्चे थे वो क्यों भाग के जाते थे उससे मिलने. Is that clear to everybody? यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? Let's have a look at it. So could you please come up with certain answers, everybody?
आप लोग दो आंसर्स कमेंट सेक्शन में, थोड़े पॉइंटर्स दो, जैसे कि मुझे ये बात समझ में आ रही है कि आप लोगों ने भी पढ़ रखा है. ऑब्वियसली यू गाइस हैव स्टार्टेड द चैप्टर लॉन्ग बैक, सो ऑफ कोर्स यू रिमेंबर अ लॉट अबाउट इट. Yes, everybody. Quickly tell me, बेकर रोल्स कब आता था, ठीक है, और चिल्ड्रन उससे भाग के मिलने क्यों जाते थे? What was the reason behind it? What was the reason behind it, everybody? Hi, Janister. Hello, dear. So, the answer is the baker would come at least twice a day. Okay. The morning was his selling round. सुबह वो अपनी चीज़ों को बेचता था. And he returned after selling them. और फिर वो क्या कहते हैं, वापस उनको बेचकर आता था. Children ran to meet and greet him. मतलब क्यों बच्चे उसको क्या कहते हैं, भाग के उससे मिलने जाते थे? तो बच्चे भाग के उससे मिलने और उसे ग्रीट करने जाते थे because they needed bread bangles from him. क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको ब्रेड बैंगल्स चाहिए थे उससे. दे ऑल्सो गॉट स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. उनसे उनको एक स्वीट ब्रेड भी मिलती थी स्पेशल मेक की. ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, once when he set out in his sailing round, and second time when he would return emptying his bucket. Yes, absolutely correct, technical gamer. If you're gonna write this in your answer, of course, sure short condition is that you're gonna get marks for it. Okay, hey Janister, hi dear, a very good afternoon. All right, so this is an absolute correct answer, right? The baker would come at least twice a day. पहला उसका घूमने का राउंड होता था, फिर वो वहां से आता था बेच के उसे, फिर बच्चे उसके पास भाग के जाते थे, उसको ग्रीट करते थे, ठीक है. So what exactly the other thing that's being given in the context of children, like how did the children used to get up? How what exactly is the contribution of the painter, okay, in order to just wake the children up? Give me an answer in the content, like in the comment section. Like, what was the contribution of the children in waking up? Sorry, what was the contribution of the painter in waking up the children? Quickly tell me in the comment section, guys. Quickly. Yeah, give me a proper sentence, no? Like you have mentioned to some extent technical. But yeah, tell me. Yes, guys, what exactly is the right answer? Quickly, everyone. Okay, they woke up due to the jung jung and thud and jingling of his tongue. Very good, Akriti. Absolutely correct. Okay, used to come with the jungling sound. Yep, absolutely correct. Okay, that is the right answer. Okay, so you should always be writing this in your answers. चलिए, अब हम चलते हैं next question पे. Is bread making still popular in Goa? How do you know? तो ये वाला question में इन्होंने क्या बोला है कि bread making क्या आज भी popular है गोवा में? आपको कैसे पता है? देखो, I would like to tell you all one thing. Like, unless the question demands your own personal opinion, right? Like, unless they ask you your opinion, you are never going to use the first person in your answers. Okay, please don't do that. Like, it says like, how do you know? So you can always write it from the third point, like third person point of view in a journalized manner. Do not go ahead with writing in the first person. Okay, that is not the right way of doing it. Is that clear, everybody? Hey, Janister, I'm very well. Thank you so much. Okay, they woke up during the jingling third of. Oh, yeah, Isha, you're right about that. Yep, it's popular. Okay. Hi, Harsh. Hi.
ओके सो ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा वी कैन सी हम कैसे बता सकते हैं ये क्योंकि हम लोग देखते हैं मिक्सर्स को हम लोग देखते हैं मोल्डर्स को एंड दोज हु बेक द लोव्स और उनको भी जो क्या कहते हैं लोव्स को बेक करते हैं मोस्ट ऑफ देयर फेस्टिवल्स ज़्यादातर उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो दूसरे ओकेजन्स होते हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते हैं विदाउट द लोव्स ऑफ द ब्रेड मतलब बिना ब्रेड के आई मीन बिना ब्रेड लोव्स के द लेडीज ऑफ द हाउस वो क्या करती हैं कि हाउ डू यू नो हमें कैसे पता है यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो द लेडीज ऑफ द हाउस है ना दे प्रिपेयर द सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट सो इफ द सैंडविचेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड on the okay like on the engagement like on the occasion of the engagement of the daughter then that of course gives us an indication that this is something important because we have different kinds of dishes to be prepared on different occasions so of course this is giving us an indication that it is like really existing today and it has got the importance today also. Hey Arga, hi Manasvi, hello dear. All right, is that clear everyone? Got it? Alrighty people. Now let's get going. What is the story about the Kudavu people's descent? Okay, so यहाँ पे Kudavu people who are like ये किसको हम refer कर रहे हैं when we are talking about the Kudavu people? Can anyone just give me like a brief information about the chapter Kur? Could you please tell me about it? Also, I wanted to ask one question right in here. Like bread making is still popular in Goa. Like what are the points that are being mentioned related to the descent of the Goa people? I mean, what exactly is the Portuguese culture that has affected the Goa culture? Okay, could you please give me the answer? Then we are gonna move to that question. I wanted to ask this question to all of you. Like, how exactly the Portuguese culture has affected the Goa culture? Could you please give me an answer for the same in the comment section? Give it a shot because we had done these questions earlier when I came up with the list of the questions that were really important, but now I would like to know this as well. Quickly. Quickly, everybody. The ladies of the house prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. We are done with this question. However, tell me that how has the Portuguese culture affected the Goa culture? Okay, here we go. All right. हर्ष बेटा क्या समझ में नहीं आया आपको क्या नहीं आया समझ Sunidhi says Alexander came with his army and couldn't go back so they married with the locals and they settled there. All right, absolutely correct. So what is now visible, like what do we see, like what's the difference, what do we see everyone? Quickly everybody. All right, so what exactly is visible now? Their dresses. Okay, here we go. Now let's get going. All right. So now that is basically visible in their dresses and their marriage rituals. I mean the rituals, they are quite different from the Hindu culture. Okay, that is what we see. That's what I wanted to ask to all of you. Now here we go. What's the story about the Kudavu people's descent? ठीक है Kudavu people descent का मतलब कि क्या story है? Like the fiercely independent people of Kurg are descendants of Greeks or Arabs. A section of Alexander's army moved south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. These people married among the locals, and this is the story about the descent. Okay. Now, why did the bakers wear? Sorry, what did the bakers wear when the author was young?
बेकर्स क्या पहनते थे जब ऑथर यंग था? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2013 में भी आया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दो। ऑल राइट, क्या पहनते थे? एंड लाइक यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द ड्रेस परफेक्टली, like what they used to wear. All right. And what is the dress like that had been like copied from them, like the people from the ancestral thing, I mean from where it has been copied, वो लोग क्या पहना करते थे? So that's what you need to keep in your mind. Okay, so just keep it like correctly in your mind. Now, the bakers in the Portuguese days wore a peculiar dress. वो बहुत ज़्यादा एक peculiar dress पहनते थे, which was known as kabai. It was a long single piece of frock reaching down to the knees. तो वो बिल्कुल एकदम knees तक पहुंचती थी, ऐसी ड्रेस थी. जब author young था, when the author was young, they wore a shirt. वो एक shirt पहनते थे. ऑल राइट, और एक ट्राउजर पहनते थे दैट वॉज लॉन्गर देन अ हाफ पैंट एंड शॉर्टर देन अ फुल पैंट. सो बहुत सारे बच्चे ना ये थोड़ा गलत आंसर लिख देते हैं एग्जाम में, जहाँ पे वो कबाई को जो मेंशन करते हैं कि वो जब ऑथर यंग था तब पेडर्स पहनते थे. हाउ एवर दिस इज नॉट द केस. So you better remember that. Okay, it's like an important point I'm mentioning right in here for all of you. जो बेकर्स पोर्टुगीज डेज में वो एक peculiar ड्रेस कबाए पहनते थे जो एक लॉन्ग पीस फ्रॉक का था, ठीक है, जो नीज तक जाता था. लेकिन जब ऑथर मतलब यंग था, इवन बच्चा था, तब जो क्या कहते हैं जो आते थे पेडर्स, वो एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर पहनते थे जो हाफ पैंट से बड़ा होता था लेकिन फुल पैंट से छोटा होता था. ठीक है, सो देयर इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन देयर कॉन्टेक्स्ट. वो वर्ड क्या है? एनीबडी? एक वर्ड यूज किया गया दैट दे हैव दिस काइंड ऑफ अपीयरेंस, लाइक देयर अपीयरेंस हैज बीन कंपेयर्ड टू समथिंग. व्हाट इज दैट थिंग दैट इट हैज बीन कंपेयर्ड टू? जिससे कंपेयर हुआ है वो क्या चीज है? क्विकली टेल मी. Quickly, people, come on. What exactly is going to be the right answer? No, it was like anybody like wearing it, like wearing such a dress would be like compared like to was being called as having a jackfruit like appearance. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी appearance कैसी होती थी, like he had a jackfruit like appearance. ठीक है, keep it in your mind. Now, here is the question. Okay, so who invites a comment? He is dressed like a pedo. Why? Alright, so what exactly is the right answer? The dress of Peter invites comments because it reaches just below the knees. It looks odd, it looks funny, and makes one's figure look like a joker. तो ये है चीज, ठीक है. जो ड्रेस है पेडर की वो इनवाइट करता था कमेंट की, वो मतलब लाइक इफ ही वाज वेयरिंग लाइक समथिंग लाइक दिस, सो वो बहुत ज्यादा ऑड फनी और थोड़ा सा ऐसा लगता था लाइक द पर्सन इज लुकिंग लाइक अ जोकर. However, it is not an offensive kind of a thing that has to be considered that way, and it's not even to be considered in a negative way. All right, it is like something which is like considered in a quite a positive manner. Okay. Now, how did the baker attract the children? Baker कैसे attract करता था children को? ये वाला जो हमारा है question, it was being asked in the year 2013. ठीक है, baker attract कैसे करता था children को? Wear trousers longer than half knees and shorter than half length ones. Yeah, Rohit, absolutely correct. Okay, that is absolutely right. Okay, here we go. Okay. How did the baker attract the children? This was being asked in the year 2013. So the baker, अब यहाँ पे फिर से मैंने क्या बोला, ये टेंसेस ध्यान दो, ठीक है, वोकैब अपनी ध्यान दो, पंक्चुएशन अपनी ध्यान दो, ठीक है, जो वर्ड लिमिट पूछी जा रही है वो अपना ध्यान कंसिडर करो, साथ के साथ आपका क्या कहते हैं स्पेलिंग्स, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हम एक आंसर बनाते हैं. अपनी ये चेकलिस्ट ना अपने बैक ऑफ द माइंड रखना, ठीक है, प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट. इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? Okay, so the baker attracted the children not by his jingle or by the loaves of bread he sold, but attracted the children by the bread bangles or the special sweet bread he sold.
तो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि बेकर ने अट्रैक्ट किया था बच्चों को अपने जिंगल से या फिर क्या कहते हैं या फिर लोव्स ऑफ ब्रेड से नहीं। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना, यहाँ पे बच्चे बहुत क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी ये वर्ड अट्रैक्ट यूज किया जाता है ना, सो उसमें क्या होता है कि आप इसमें कंसिडर करते हो कि वो अपनी स्पेशल ब्रेड से उसको अट्रैक्ट करता था, ठीक है, नहीं सॉरी कि वो ना उसको अपने जिंगल से अट्रैक्ट करता था, ये लोव्स ऑफ ब्रेड से नहीं। एक्चुअल रीजन है कि बच्चे ब्रेड बैंगल से अट्रैक्ट होते थे या फिर वो जो स्पेशल ब्रेड बनाता था, जो जिंगल्स थे। Alright, third or jingle that was being used in order to just like wake them up. Okay, वो भी intentionally नहीं था, but बच्चे बहुत excite हो जाते थे because the baker, alright, he was acting and the Peter was acting as a companion, a friend, and a mentor to them. Alright, is that making sense to you? Alright, by jingling of bamboo and with this, ना 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 रोहित, वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अट्रैक्ट नहीं हमें यहाँ पे यूज करना है। अट्रैक्ट के केस में आप जिंगल नहीं यूज करोगे, साथ में आप ये भी नहीं बोलोगे कि वो लोव्स ऑफ ब्रेड से। वो सिर्फ बच्चे अट्रैक्ट होते थे, वो जो वो ब्रेड बैंगल्स लेके आता था उसी से वो अट्रैक्ट होते थे। दिस इज वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। समझ में आई ये बात? इज दिस क्लियर टू यू एवरीबडी? तो हाउ डिड द बेकर अट्रैक्ट द चिल्ड्रन? यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना कि आप इसमें जिंगलिंग का मेंशन ना कर दो या फिर लोव्स ऑफ ब्रेड का भी मेंशन नहीं करो, बल्कि आपको मेंशन करना है सिर्फ ब्रेड बैंगल्स और स्पेशल स्वीट ब्रेड ही सोल्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल। इफ यू आर हियर टू स्टडी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके, बिकॉज आई डोंट फील दैट यू आर हियर टू स्टडी। ओके, इज दैट क्लियर एवरीबडी? गॉट इट? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। ठीक है, क्लियर? Okay. Baking was considered an important and a profitable profession in a traditional Goa village. Explain. Our bread and cakes were essential of Goa life in older days. Describe the memories that the author recollects about good old Portuguese days and their loaves of bread. Okay, so this is like one of the questions wherein the answer that we are like looking at, it's gonna be a little longer question. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बेकिंग को कंसीडर किया जाता था एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ट्रेडिशनल गोवा विलेज में, और या फिर ब्रेड्स और केक्स ना बहुत एक असेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे गोवा की लाइफ का। ठीक है, तो आप मेमोरीज डिस्क्राइब करो जो ऑथर रिकलेक्ट कर रहा है या ऑथर सोच रहा है अच्छे हमारे पुराने गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज के बारे में या उनके लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में। So we see in olden days Goa was very much influenced by the Portuguese. Baking was considered एक essential और एक profitable profession traditional Goa village में। Portuguese were famous, जो Portuguese थे वो बहुत ज़्यादा famous थे prepare करने के लिए loaves of bread. Baking एक traditional family work था, मतलब वो एक खानदानी काम था। All right, that is what was happening. Okay. Now we see the villages, okay, were much fond of the sweet bread known as ball. All right, so the marriage gifts were meaningless without it. So marriage gifts जो होते थे, जो शादियों में क्या कहते हैं गिफ्ट जाते थे, वो बिल्कुल ही all right, ऑल राइट, जो भी मैरिजेस में मतलब गिफ्ट जाते थे वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस थे विदाउट इट। तो द बेकर्स फर्नेसेस वर द मोस्ट एसेंशियल, इसलिए जो बेकर के फर्नेसेस होते थे वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते थे। एंड केक्स एंड बोलेनाज, और जो केक्स और बोलेनाज होते थे वो एक इम्पॉर्टेंट आइटम थी वहाँ पे। वेरियस ओकेजन्स पे जैसे कि क्रिसमस या फिर दूसरे फेस्टिवल्स हो गए, द बेकर्स वुड कलेक्ट द बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ज्यादातर वो हमेशा क्या कहते हैं मंथ के महीने के आखिर में वो बिल कलेक्ट करते थे। तो बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस लाइक प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। तो बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने दिनों में। दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, एम आई क्लियर ऑन दैट? गॉट दैट एवरीबडी? समझ में आया सबको ये बात? यस, क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये 6 मार्क का क्वेश्चन था। सो वी आर डन विद द वेरी पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। नाउ वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कूर्ग। ओके, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सारे में आपको क्या कहते हैं फैक्ट्स दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है, सो यू बेटर पे अटेंशन टू एवरी माइन्यूटेस्ट डिटेल दैट्स देयर। ओके, डू नॉट लेट इट गो जस्ट लाइक दैट।
So what do the people of Coorg teach us? Coorg people are famous for their hospitality. जो Coorg के लोग हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं? वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है, लव के लिए फेमस है, वहाँ की रिस्पेक्ट के लिए और फेलो फीलिंग के लिए, विच इज़ नीड ऑफ द प्रेजेंट आर. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, द क्वालिटीज ऑफ द पीपल लिविंग देयर. ठीक है, कि वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा लव के लिए जाने जाते हैं, रिस्पेक्ट के लिए जाने जाते हैं, फेलो फीलिंग के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी के टाइम में. द एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गई, कैनोइंग हो गई, रैपलिंग हो गई, रॉक क्लाइंबिंग हो गई या माउंटेन बाइकिंग हो गई, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट मोटिवेटर्स हैं वहाँ पे. ठीक है, तो ये मेंशन मतलब ये एक टाइप का अलग क्वेश्चन आता है दैट व्हाई डू लाइक व्हाट how do the lazy people also become energetic in Coorg? Because it has got a lot of adventurous activities to offer. ठीक है, इसके पास बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं ऑल राइट ऑफर करने के लिए. इसलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो द कूर्ग रेजिमेंट, जो कूर्ग का रेजिमेंट है दैट इज द आर्मी एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, जो आर्मी एरिया है ऑल राइट, वो बहुत ज़्यादा फेमस है रिसीव करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर इट्स ब्रेवरी. तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, कि इसको बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं ब्रेवरी के लिए. और जो हमारे फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के जनरल करियप्पा, ही वॉज ऑल्सो अ कूर्गी. So these are all the aspects that you have to keep in your mind while you are writing an answer related to the people of Coorg or the qualities that were being shown by the people of Coorg. Okay, keep it in your mind. Am I clear on all these things? Okay, I hope that's clear to everybody. Got it? Right, so if it's a like a 3 marker question, that was like way more enough to write. However, if the same question is being asked in a 6 mark thing, then you have to write a lot many other things as well. Okay, why has Coorg been referred to as a piece of heaven drifted from the kingdom of God? ठीक है, हमने कूर्ग को क्यों ऐसे रेफर किया है कि ये एक पीस है हेवन का जो कि किंगडम ऑफ गॉड से आया है. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. I have marked it here as a special question because they are like literally the special ones. They like cover the most of the important aspects from your chapter. Okay, all right. ओके, तो कूर्ग इज ऑफन रेफर्ड, मतलब कूर्ग को ज्यादातर मतलब एक ऑफन मतलब बहुत बहुत बार ऐसा रेफर किया जाता है जैसे कि वो एक स्मॉल पीस है हेवन का, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी. उसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से उसको एक छोटा सा पीस बोला जाता है. ठीक है, हेवन का. ऑफ इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे है, रोलिंग हिल्स हैं, कॉफी प्लांटेशन हैं, स्पाइस ट्रीज भी हैं. ठीक है, तो वहां पे क्योंकि वो जो ऐसे रोलिंग हिल्स, क्यों उसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स भी क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट्स ऑन अ स्लोपी एरिया. लाइक व्हेन यू लुक it from like a place, no, they'll appear to this like they'll appear to you like as if they are rolling down. Okay, that is what it is. Hi Ashmita, hi dear, hello everybody. Alrighty, here we go. Okay, so we see the freshness of the natural surroundings is further enhanced by the aroma of coffee. Aroma is like the smell. We are basically talking about the fragrance, okay, of coffee. That is what we have to concentrate upon. All right, is that making sense to all of you? Is that right, everybody? Is that correct, everyone? So Coorg is often referred to as a small piece of heaven because of its natural beauty of its evergreen forest, rolling hills, coffee plantations and spice trees. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What legacy have the colonial powers left to the district of Coorg? ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या legacy colonial powers में मतलब दी गई है जो बची है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ Coorg में. So colonial presence in Coorg region is evident from the legacy of bungalows and coffee plantations. Like these are the two major points that you have to consider. All right, Anandita beta, summaries. Like I'm not dealing with the summaries here. Anywhere I never go ahead with the summaries. Okay, but I just give the highlights of the chapters and we had done that a long way before. Right now I am just dealing with the explanation, sorry, the questions which are very important.
Okay, because summary is not like, even I'll suggest this personally to you, and I've been saying this in all my sessions, don't go ahead with the summaries. If you're just thinking that you'll write the summaries in your examination, you'll be good to go, no, don't do that. No teacher ever entertain an answer wherein there is just a summary part. Okay, also summary doesn't help these days. All right, those days were gone. I mean, those days are long gone. Those things do not happen anymore, so don't let that happen. Okay, that's not the right way either. All right. So colonial presence in Cook region is evident from the legacy of the bungalows and coffee plantations that the region has inherited from them. Okay. So it is believed that Kurgis are descendants. मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जो Kurgis हैं वो descendants हैं किसके, Greek और Arab के, and the culture of these regions is strongly evident in the martial traditions and their marriage and the religious ceremonies. Keep it in your mind. ठीक है, कलनियल प्रेजेंस जो है कूग रीजन में वो दिखाई देती है आपको लेगेसी ऑफ बंगलो से, कॉफी प्लांटेशन से, जो रीजन जो इनहेरिट हुए हैं वहां से। ऐसा माना जाता है कि जो कुर्गीज हैं वो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब वो आए हुए हैं ग्रीक से या अरब से। और ये जो कल्चर है इनके रीजन्स का, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली देखा जाता है मार्शल ट्रेडिशंस में, ठीक है, या उनकी शादियों में या फिर उनके रिलीजियस सेरेमनीज में। सो यू बेटर कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, इट्स लाइक सुपर डुपर इम्पोर्टेंट. Okay, however, like as I said, that since I mean, since I said that these things, they are really the very you mean like these things, they are very what is it, like they are very factual. You cannot distort the information, so you cannot write anything on your own. It has to have the meaning. Okay, keep it in your mind. Now, why is the climb to the Brahmagiri hills an important part of a visit to Coorg? This is again an important thing. देखो, कूर्ग तो एक ऐसा चैप्टर है बेटा, इसमें से तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन. So you better prepared with every type of question for your own sake. All right, so यहाँ पे क्या बोला गया है? The climb to the Brahmagiri hills offers the panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Besides, मतलब besides यहाँ पे क्या दिखा रहा है? Like additionally. All right. Additionally, it leads to Nisargadhama and then to Bailakupa, the hidden surprises for the visitors. Thus, it is important to climb the Brahmagiri hills while visiting Kurg. इसलिए ये important है कि climb किया जाए ब्रह्मागिरी hills पे जब आप क्या कहते हैं Kurg visit कर रहे हो. Okay, now the important thing is that you have to learn the spellings. Please make sure that you know the spellings. ये मेजर जगहों के नाम है, अगर आप इनकी स्पेलिंग्स गलत लिखोगे ऑफ कोर्स आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे. तो डोंट लेट दैट हैपन, डोंट लेट योर मार्क्स बी डिडक्टेड. इंस्टेड जस्ट यूज द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन योर माइंड, विच वुड बी देयर इन योर माइंड. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारी स्पेलिंग्स को लर्न कर रहे हो. उनको एक बार लिख के चेक कर लो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है. हमारे बचपन में डिक्टेशंस होती थी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया है ये सब. सो वहां पे डिक्टेशन का मेन पर्पज इज टू मेक यू लर्न द स्पेलिंग. सो यू बेटर लर्न द स्पेलिंग. ओके, लर्न करोगे स्पेलिंग तभी आप अच्छे से समझ पाओगे. इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से हमारा वी आर डन विद ऑल द मेजर क्वेश्चंस. ऑल राइट, आई मीन वी आर डन विद ऑल द मेजर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कूर्ग. नाउ इट्स द टी फ्रॉम असम. आप जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है. ऑल राइट, क्या क्या इसमें हमारे लाइक मेजर पॉइंट्स है टी फ्रॉम असम में. व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट वी सी इन दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर? क्विकली एवरीबडी, just give it a shot. I'm sure everybody does know it. क्या दे रखा है टी फ्रॉम असम में? What are the major things? Quickly, जल्दी से बताओ. Immediately, everyone, you all can do that. It's not that difficult. Okay, quickly do that, everybody. Yes, guys. Everyone, quickly tell me. Everyone. Quickly, guys. What exactly is the right answer? Quickly. Okay.
So, like, what exactly the thing is, like, tea from Assam is basically one of the chapters wherein we come to know, like, as I said, like, coffee is something which is basically known as the coffee country. I mean, Coorg, sorry, is the chapter which is known as the coffee country because of the aroma right in there. And this very particular thing, I mean, your Coorg is known as the coffee country and Assam is known as the tea country. So you have to be very sure of the facts. I mean, the kinds of answers that you're gonna go ahead with. They have to be like particular. I mean, not particular. I mean, the answers that you're gonna write, they have to be like totally contextual. And it's like total. And it is like totally based upon your facts. So you have to be like very exact about it. Nancy, you can go ahead with Educart. You can order that. Tea from Assam deals with the tea plantations in Assam, which is the largest plantations. Akriti, absolutely good. So let's look at the very first question. How are the tea pluckers different from other farm laborers? Okay, so this is like one of the questions which could be asked in your examination somewhere related to your chapter tea from Assam. कि जो tea pluckers हैं वो दूसरे farm laborers से कैसे different होते हैं? Tea pluckers are different from the other farm laborers as the tea pluckers are hired laborers, whereas the farm laborers can be hired or can be the owners of the land. Alright, so tea pluckers just pluck leaves, यानी कि वो सिर्फ leaves को तोड़ते हैं, ठीक है. Whereas लेकिन जो farm laborers होते हैं ना, जो farm पे काम कर रहे होते हैं, वो पूरे प्रोसेस से go through करते हैं. That is सोने से बोने से लेके उसको फसल को काटने तक. That is from sowing to harvesting. Alright, that is what you need to keep in your mind, that the tea pluckers are different from the other farm laborers as the tea pluckers are hired laborers, whereas the farm laborers can be hired or can be the owners of the land. Tea pluckers just pluck leaves, whereas farm laborers go through the whole process, that is from sowing to harvesting. Is that making sense to everybody? Did you all get that well? समझ में आई ये बात आपको? Right? So like everything is included well in it. Like tea pluckers थोड़े अलग होते हैं, farm laborers अलग होते हैं. So the answer has to include all the points which are sufficient for a 3-mark question. ठीक है. Next question हमारा आता है राजवीर. Just a moment. Yep. Describe the viewpoint of Rajveer towards tea plantation. ये भी एक important है. और Rajveer is like one of the very important characters in this very particular chapter. Wherein what are we exactly doing is that we have to focus upon the points that are being mentioned by Rajveer related to the plantation, because Rajveer makes a vast study about tea plantation. वो एक vast study करता है tea plantation से related. Okay, vast is like a very huge, like a very detailed. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल, which shows that he is really an intelligent person. All right, like these are the words we can use, and a well-read boy, a well-read child also, because he had a lot of information about Assam. Like that clearly shows like when you're going somewhere to any place, so you are just gathering the right kind of information. So that is like really a very good point to consider. ठीक है. So Rajveer makes a vast study about tea plantation. He thinks that he should have the curiosity to get the knowledge about tea plantation as tea is exported in huge proportion throughout the whole world. Tourists also come to Assam to get information about the tea plantation. Okay. Next question up that we are gonna consider, which is again an important one. How was the tea estate and its scene according to Rajveer? All right. So why was Rajveer going to Assam? Could you please give me an answer to the question in the comment section quickly, everybody? Why was Rajveer going to Assam? Give me an answer for the same in the comment section. Yes, everybody. Why did Rajveer, like why is it that he was traveling to Assam? What was the reason behind it? Tell me the reason that's being stated.
Sam, because he was invited by his school friend Pranjal for his summer. Very good, Akriti. I am impressed. Very right. Okay, that is an absolute correct answer. So अभी क्या है, like when he visited there, like he was feeling so much excited. He was so happy. He was really feeling good while looking at the greenery, because he was a person from Delhi, and in Delhi there is like no greenery too much, because like it's so very much a populated city. All right. So when he was just visiting Assam and he was looking at all the gardens around, it was a source of like excitement and enjoyment for him, and that is why he was loving it. All right. So this question could also come in the examination for 3 marks. Make sure that you all are writing it in the perfect manner. Now, how was the tea estate and its scene according to Rajvi? So, according to Rajvi, the road in which they were moving was bounded, like was being bounded का मतलब क्या होता है? Surrounded. ठीक है, it was being surrounded by tea bushes on both the sides. They were neat enough as well as of the same height. All right. The people who plucked tea leaves were wearing aprons, and they kept the bamboo baskets with themselves on their back. ऑल राइट, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. सो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली एक 3 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको एक ब्रीफ मैनर में लिखा है. हाउ एवर इफ यू आर गोइंग टू राइट द सेम क्वेश्चन इन अ 6 मार्क थिंग, वहां पे ये थोड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा. So how was the tea estate and its scene according to Rajveer? So according to Rajveer, the road in which they were moving was surrounded by the tea bushes both sides पे. They were neat enough as well as of the same height, मतलब अच्छे खासे थे और same height के थे. The people who pluck tea leaves, जो वहाँ पे जो लोग थे जो pluck करते थे tea leaves, were wearing aprons. उन्होंने aprons पहन रखे थे और वो अपनी bamboo baskets को पीछे रखते हैं. These people were busy. ये सब लोग बहुत ज़्यादा busy थे क्या करने में? tea leaves को pluck करने में. That is what we know about them. ठीक है. Now the next question. Why did Mr. Barua praise Rajveer, and what did Rajveer say then? Who was Mr. Barua? Tell me the answer in the comment section. कौन थे Mr. Barua? जल्दी बताओ comment section में. Who was Mr. Barua? Quickly everybody in the comment section. जल्दी बताओ. Who was Mr. Barua? Tell me in the comment section everybody. Guys, don't forget to attend the next session right at 5 p.m. wherein I'm going to tell you all how to deal with your reading comprehension. Okay, it's going to be an important session, so be right there, everybody. So why did Mr. Barua praise Rajveer? What did Rajveer say then? Quickly in the comment section, everyone. Okay, so you are saying that Mr. Barua was Pranjal's father. All right, that's right. Mr. Barua was Pranjal's father. Absolutely correct. So Mr. Barua praised Rajveer as he answered it correctly that the sprouting period lasts from May to July and yields the best tea. Rajveer admitted that he had learned about it before coming, but he hoped that he would learn more there. Okay, so these were all the very important questions already. Now the next question. What is the Indian legend of tea? Legend is like story. जो Indian story है वो क्या है? Bodhidharma was an Asian Buddhist ascetic. ठीक है, वो मतलब एक मुनि थे. During meditations he felt sleepy. उनको मतलब नींद सा आने लग जाता था. As a result of which, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी eyelids को काट लिया था. तो जब उन्होंने वो उतार के फेंकी थी अपनी, जब उन्होंने अपनी आईलिड्स फेंकी थी, तो वहां से 10 टी प्लांट्स उग गए थे. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर बॉइल्ड, मतलब जो उनकी लीव्स थी वो बॉइल की गई थी गर्म पानी में और फिर उनको पी गई थी. ऑलराइट, सो जिससे क्या हुआ था, दैट इट बैनिश्ड द स्लीप. ऑलराइट, नाउ कुड यू प्लीज टेल मी द चाइनीज स्टोरी. चाइनीज स्टोरी क्या है? एवरीवन, एनीबडी डज नो? Okay, just try to give me the answer in the comment section for it. Alrighty. So guys, we have got the amazing offer going on. It's for CBSE class 6 to 12. We have this special offer running right now. You all can get 45% off. Unlimited access to live and recorded classes would be given. Structured batches and courses would be there. In-class doubt solving would be there by the top educators. Live tests and quizzes would also be there. You all can make use of my code PSH10 for your own betterment. The offer is going on right now. Kindly go and
subscribe, because I am also taking a course all right here on like Unacademy app, wherein you all are getting an access to the perfect answers for yourself. Like you'll be given the personal attention, and we are gonna address every bit of everything which is being needed. Alrighty. So here guys, like this is the plus thing. Like here, like for example, if you go for 6 months, the actual cost is 15,199. But what you're gonna pay is 88,549, and we're gonna save is 6,650, which is like 44% of the savings. Similarly, for 18 months, like you, the current price is 30,499. What you're gonna pay is 20,249, and you're gonna save 10,250, which is up to 34% of the savings. So keep all these things in your mind. In your iconic, we have got 12 months, for example. If you go for 37,030 rupees, you're gonna pay, sorry, just a minute, everyone. Alrighty, here we go. Yep. So for this, what you have to pay is that you will have to pay 23,399 rupees. Okay, and you can save 13,631, which is 37% of the savings. So subscribe right away, everybody, by using the code PSH10. It's gonna be really important for everybody. Okay, you'll be getting the appropriate kind of like understanding for everything. So the linguistic batch is going on for grammar, for Hindi and English. It is for class 10. Got started on November 17. We have Lakhan sir teaching English, Akash sir teaching Hindi B, Vandana ma'am teaching English, Bhavna ma'am teaching Hindi A. Then we have one shot revision for math, social science and science. Okay, for class 10 batch start date, like it got started on November 3. Mode of delivery is English. Vinay sir, Akshay sir, Himal sir and Hardik sir is there, like teaching you math, biology and chemistry, physics and social science respectively. Then we have answer writing batch and PYQs for math, science and social science. It got started on November 10th. This is for class 9. Mode of delivery is English. We have Vinay sir, Hardik sir and Dr. Bhavna ma'am teaching you math, social science and science respectively. Then we have compete, battle and know where you stand, play one-to-one live question battles and improve your rating. It's live on the Unacademy Android app. Thank you, everybody. I hope that there was a Chinese who always boiled before drinking it, and somebody's a twig fell on water. And yeah, absolutely correct, Akriti. Absolutely correct. Good. Alrighty, people. Thank you so much. Do meet me at 5 p.m. wherein we are gonna tell, like, I'm gonna tell you all how to crack the reading comprehension. I hope you all love the session. Do not forget to like it and share it with all your friends, and definitely hit the bell button to subscribe the channel. I'm gonna catch up with you all